Meeting is called to order. Hello everyone, a very good evening. My name is Ritika and I'm a Vice President of Rotary Club of Organ Donation International. But due to the non-availability of our Secretary Rotarian Pratul Agarwal, I'm going to be conducting the meeting for today. And I would first like to request Rotarian Lal Goyal to please confirm the minutes of the previous meeting. The previous previous meeting minutes were circulated among the members, and as we have not received any objection or observation, I presume that everyone has confirmed. So I hereby confirm the minutes of the previous meeting. Thank you very much. Moving on, the agenda for today is a talk on organ donation, role of Sotto by Professor Dr. Manish Purohit. He's Microbiology Department, MGM, Medical College and Nodal Officer of State Organ and Tissue Transplant Donation, Madhya Pradesh, Indore. I would now like to take the opportunity of sharing with you all a brief profile of Dr. Manish Purohit. So, Dr. Manish Purohit is an MBBS and an MD. He is also an associate professor in the microbiology department at Mahatma Gandhi Memorial Medical College in Indore. And also, he's a nodal officer of State Organ and Tissue Transplant Organization, Sotto, in Madhya Pradesh. He's been working since 2018 as the nodal officer of Sotto. Sotto MP Dr. Manish Purohit has received Sotto MP Best Emerging Sotto 2024 Award from NOTO, New Delhi, MOHFWGOI by the Government of India. Best Sotto Award in 2019 from NOTO, New Delhi by the Government of India. And also as the Emerging District Award Indore in 2016. So I would now like to invite Dr. Purohit to please come ahead. I think, yes. Before Dr. Purohit will come, I would like to also introduce, we have a guest among us. He's Dr. Sanjay Dikshit. Dr. Sanjay Dikshit is ex-dean, MGM Medical College, Indore. He was also with the Government Medical College, Ratlam. He is the ex-secretary, Indian Society of Organ Donation, and he was the ex-in charge of Sotto, Madhya Pradesh. Welcome, Dr. Sanjay Dikshit, on this very meeting on the organ donation role of Sotto. And thank you very much because myself and Mr. Rotarian Ramnath Pradeep and Rotarian Dr. Verma, we all met you in your office, and the courtesy you have extended at that time, and the way we found that how much dedication you have for the cause of organ donation. Really, it was very, very appreciable. So thank you very much for joining us as a guest. And now I hand over the things to Dr. Purohit. Madam, thanks for giving this opportunity to speak here about the Sotto and about the organ donation. So I will share my PPT with you. Is it visible? Dr. Purohit, no, it's not visible. I request Rotarian Ritika Gupta just to guide. All right. Dr. Manish, do you have it opened on your laptop? Yes, ma'am. Okay. Now you on your Zoom window, you would be seeing a green button at the bottom, which is an arrow pointing upwards. Yes. Please click on it. Okay. Yes. Please click on it. Oh. It will give you an option to share whatever you want to. You just have to click on your screen where your presentation is opened. First, I have to open the presentation, ma'am? Yes, open the presentation on your laptop. Okay. Yes. I have opened my presentation. Okay, now come back to the Zoom window. Yeah.
Click on the share button, which is in green at the bottom bar of Zoom. Okay. Okay. There's a green colored button reading share. Can you see it? Share. Yes. 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 Yeah, now we can see. Also, I would like to ask you, Mr. Dr. Purohit, do you have any video in this or it's just No, no. slides? It is a slide, ma'am. There is no video. All right, perfect then. Then it should be fine. Thank you. Okay. Right, right. It is moving. Right. So thank you everyone and good evening. Welcome to all. And my topic is organ donation roles of Sotto. Right. So I think everybody is aware about the Sotto. That is the State Organ and Tissue Transplant Organization. So I will briefly describe the role of Sotto, and I will also like to. I would also like to share the various aspects of the organ donation that covered by the Sotto. So first, start with the some facts that India is the third country in the world after USA and China in the terms of total number of transplants done in a year. So this is a good that India is third in the world. And if we go to the statistics, the total number of transplants in the country has increased from 2013 to 2023. You can see figure that near about 5,000 to 18,000 we have moved ahead, right? And organ donation rate is also increased from 0.27 to 0.65 from 13 to 18. So it is also increasing. So these figures show that we are increasing our figure of the organ transplantation, our organ donation, right? Then capacity for undertaking rare transplant, like pancreas transplant, hand, limb, lung, uterus, are also developed within country. Even donation also after cardiac death is also developed, right? So this figure shows that we are doing well and we are increasing our donation. But then why we are thinking about the increase in rate of organ donation in the country? So if we go to historical achievements, from 1967, we are doing the transplantation in our country. The first category kidney transplant in 67, then heart transplant, multi-organ transplant, lung transplant, and pancreas transplant. All transplant developed gradually in our country, and for so far time up, we are doing that all this transplantation. But still, 5 lakh Indians die every year due to the unavailability of the organ. So you can see here that even after doing this, all this achievement, all this development of the technology, still we are losing our people because of the shortage of the organ. Why there is shortage of the organ? हम क्या समझे इससे कि organ क्यों कम हो रहा है हमारे पास? इतनी सारी population है हमारे यहाँ पर में. There are so many brain stem deaths. There are so many accidents happen. But फिर भी हमारे पास में organ का availability कम है. तो अगर एक फिगर से ही हम समझें डिमांड वर्सेस सप्लाई या डिमांड वर्सेस अवेलेबिलिटी अब हम बात करें तो वी कैन सी हियर दैट फॉर द डिफरेंट ऑर्गन नीड पर ईयर इज डिफरेंट and actual availability is very small. Just for example, kidney near about 2 lakh kidney required per year, but availability is only near about 11,000, 12,000. For it is same for all organs, liver or heart, cornea. So as per the demand, our availability is very low. That's why we need organ donation movement to upgrade to fasten so that we can complete our demand. What are the issues and challenges? क्यों हमारे यहाँ पर इतना डिमांड है और इतनी अवेलेबिलिटी कम है? क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? कल सर ने भी बताया था, लाल सर ने भी काफी इस चीजों को डिस्क्राइब किया था. तो देर इज ए हाई बर्डन. हमारे पास में ऑर्गन फेलियर केसेस बहुत ज्यादा हैं एंड डोनर इतने ज्यादा नहीं है. क्यों नहीं है? व्हाई देर इज नो डोनर? बिकॉज लेक ऑफ अवेयरनेस नहीं है लोगों में. ब्रेन स्टेम डेथ को लेके कंसेप्ट क्लियर नहीं है. एंड ऑल्सो हॉस्पिटल आर नॉट रिपोर्टिंग ब्रेन स्टेम डेथ कंटिन्यूअसली. इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा डेवलप नहीं है. बड़े बड़े शहरों में कई जगह पर अवेलेबल है, बट कई सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पर में ऑर्गन डोनेशन की, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है. Transportation of the donated organ is also an issue. Gaps in data reporting and high cost also, because organ donation is not at the free of cost. In the basically presently it is done by the mostly by the private hospital and the cost is very high. So these are all issues and challenges so that we are not fulfilling our requirement. तो क्या कर सकते हैं, क्या इसके लिए किया जा सकता है? तो गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया था 1994 में, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट.
बनाया था, जो सोचा था कि इसके लिए जो कुछ गलत चीजें न हो, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, लोगों को ऑर्गन बराबर तरीके से मिले। एंड उसी को अपडेट किया गया 2011 में, 2014 में, एंड दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट, दैट आल्सो इंक्लूड टिश्यूज लाइक कॉर्निया, tendon, bones, these are all skin, these are tissues. Organ and tissue both included in the SOTA Act. Brain stem death, as organ donation can be done after brain stem death. So it was legalized in the 1994. Before that, cardiac death was considered as a death, but brain stem death is also considered as a death since 1994. Uh, Indian government has launched the National Organ and Transplant Program, and under this program, NOTO was established in November 2010, National Organ and Tissue Transplant Organization. It is the apex agency. NOTO, National Organ and Transplant Program guidelines are also available over the internet that can be freely downloadable from the site of the NOTO. It contains all the information related to organ transplantation. So NOTO is the apex agency which is highest agency, and under the NOTO there are 5 ROTOs are established. ROTO are the regional organ tissue transplant organization. So east, west, north, and 5 center, 5 ROTO are established: Chennai, Mumbai, Kolkata, Chandigarh, and Guwahati. And under these ROTO, different SOTOs are established in different states. तो सीधा सा अपना एक चेन बन जाती है। सबसे ऊपर नोटो है, नोटो के अंदर में रोटो है, और रोटो के अंदर में सोटो है। और वही मेरा आज का टॉपिक है कि सोटो के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो हम थोड़ा थोड़ा सभी के फंक्शन देखें तो हम सोटो के फंक्शन हमको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो प्रेजेंटली देर आर 13 सोटोस आर फंक्शनिंग इन द कंट्री। रोटोस आर ऑल्सो एक्ट एज ए सोटो इन देयर रीजन। तो रोटो, सोटो, सोटो के क्या क्या फंक्शन है वो हम अभी आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तो ये रोटोस डिफरेंट स्टेट्स को कवर कर रहे हैं, जो जहां भी ट्रांसप्लांटेशन होता है उन स्टेट्स को कवर करने के लिए डिफरेंट 5 रोटोस हैं जो सारे स्टेट्स को कवर करते हैं। स्टेट्स में सोटोस बनाए गए, कुछ स्टेट्स में सोटो है अभी, कुछ स्टेट में सोटो भी नहीं है, जो अब धीरे धीरे डेवलप किए जा रहे हैं। तो जस्ट ब्रीफली गो टू द ब्रॉड फंक्शन ऑफ नोटो। तो नोटो का क्या फंक्शन है? तो नोटो इज बेसिकली टू मेक द पॉलिसी। जितनी भी पॉलिसी कंट्रीज में बनाई जानी है रिलेटेड टू ऑर्गन डोनेशन, दैट इज ड्राफ्ट बाय द नोटो। देन नेशनल रजिस्ट्री इज मेंटेन बाय द नोटो। नोटो के पास सारी जानकारी होती है, कितने पेशेंट्स हमारे पास में अवेटेड हैं, और द ऑर्गन, किस ऑर्गन के लिए कितने पेशेंट हमारे पास में है, कौन सा टिश्यू का अभी क्या स्टेटस है, कितने लोग हैं, कितनी बीएसडी हो रही, सारा डेटा मैनेजमेंट का काम जो है नोटो पूरे कंट्री से डेटा लेकर के अपडेट करके रखता है। नेशनल रजिस्ट्री इज डेवलपिंग, दैट इज द वेब बेस्ड पोर्टल है जिसमें वो सारे इंडिया की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट व्हेन ऑर्गन, जब भी अलोकेट करना होता है, जब भी ऑर्गन अवेलेबल होता है डोनेशन के लिए, तो इट कोऑर्डिनेट फॉर द अलोकेशन ऑफ द ऑर्गन आउटसाइड द कंट्री, राइट। तो ट्रेनिंग करवाना, वर्कशॉप करवाना, फंड प्रोवाइड करना, बजट प्रोवाइड करना, दीज आर ऑल फंक्शंस ऑफ द नोटो। देन रोटो क्या करता है? So Roto is also a networking site which maintain, monitor, supervise allocation. वहां पे सोटो नहीं है, वहां पे अलोकेशन का काम रोटो करता है। जहां पे सोटो है, सोटो को मॉनिटर करने का काम रोटो करता है। इट ऑल्सो मॉनिटर द कोऑर्डिनेट ऑर्गन अलोकेशन व्हेन इट हैपन आउटसाइड द स्टेट। जैसे मध्य प्रदेश में अगर कोई ऑर्गन का अलोकेशन हो रहा है और अवेलेबल नहीं है रिसिपिएंट, तो उसको आउट ऑफ स्टेट भेजना पड़ेगा। दैट वुड बी डन बाय द रोटो। स्टेटिस्टिक्स लेता है, सभी सोटो से स्टेटिस्टिक्स लेकर के अपना डेटाबेस तैयार करते हैं। ट्रेनिंग करवाना, आईसी मटेरियल प्रोवाइड करवाना, टेक्निकल सपोर्ट देना, दीज आर ऑल फंक्शंस ऑफ द रोटो। तो बेसिकली नोटो और रोटो दोनों के फंक्शन हमें ब्रीफ में पता लगे कि रोटो नोटो क्या काम करते हैं। बिफोर गोइंग टू द फंक्शन ऑफ द सोटो, आई वुड लाइक टू ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट द प्रोसीजर ऑफ द ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन किस तरीके से होता है, किस प्रकार से ऑर्गन का सिलेक्शन, रिसिपिएंट डोनर सिलेक्ट होते हैं, मूवमेंट उनका किया जाता है। तो ये तो बेसिक अपना फ्रेमवर्क हो गया। नोटो है, रोटो है, देन सोटो है। सोटो किस तरीके से काम करता है, तो आई होप कि जिस स्लाइड्स में आप एक जो प्रोसीजर देखेंगे, तो यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द सोटो। तो सोटो स्टेट लेवल अथॉरिटी है दैट मेट द डिविजनल लेवल
appropriate authority. At the every medical college, the dean worked as the appropriate authority. Appropriate authority क्या है? He is having the power for his रीजन. उनको एक डेफिनेट एरिया, उनका जो रीजन है, उस रीजन में जितने भी ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड एक्टिविटी होगी, उसको मॉनिटर करने का काम, उसके अप्रूवल का काम डिविजनल लेवल पे किया जाएगा एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा. एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, राइट. एप्रोप्रिएट अथॉरिटी दो प्रकार से बनाएगी, वन एट द स्टेट लेवल, वन इज द डिवीजन लेवल. स्टेट लेवल अथॉरिटी एक होगा एंड अदर आर द डिविजनल लेवल अथॉरिटी. तो ये एप्रोप्रिएट अथॉरिटी सोटो के अंडर में सुपरवाइजर में काम करेंगे एंड दे विल रिपोर्ट टू द सोटो. सारा जो भी काम ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड, अगर किसी हॉस्पिटल को परमिशन देना है ट्रांसप्लांट के लिए, रिट्रीवल के लिए या टिश्यू बैंक स्टेब्लिश करने के लिए, तो परमिशन देने का काम एप्रोप्रिएट अथॉरिटी करेगा. सारा इंफॉर्मेशन सोटो को रिपोर्ट करेगा. तो पीएचडी पैनल बनाना है, अगर किसी हॉस्पिटल को ब्रेन स्टेम डेथ सर्टिफिकेशन के लिए अपने डॉक्टर्स की पैनल बनाना है, विल बी अप्रूव्ड फ्रॉम द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी. तो जो डिवीजन लेवल का मेडिकल कॉलेज लेवल पे जो डीन्स हैं, दे आर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंड दे विल वेरीफाई, दे विल वैलिडेट, दे विल अप्रूव द मेंबर्स फॉर द बीएसडी पैनल. अगर कहीं से कोई कंप्लेंट आती है तो दे विल आल्सो डन दैट रिजोल्यूशन एंड स्क्रूटिनी ऑफ दैट कंप्लेंट. तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इज मोस्ट इंपोर्टेंट लैंडमार्क, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्ट, जो कि सारा ऑर्गन डोनेशन एक्टिविटी, ट्रांसप्लांटेशन एक्टिविटी को अपने रीजन में मॉनिटर करेगा, एग्जीक्यूट करेगा एंड इन्फॉर्म टू सोटो. सोटो को कहीं भी उसमें लगता है कि ये काम ठीक नहीं हो रहा है, तो सोटो विल इंटरफेयर विद दैट मैटर. कहीं भी उनका कुछ प्रॉब्लम हो रही है उन लोगों को, सोटो उसको रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा. दैट इज द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी. सेकंड थिंग, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कैसे काम करेगा? तो विल मेक एन ऑथराइजेशन कमिटी. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी. ऑथराइजेशन कमिटी में मेंबर्स कौन होते हैं? जस्ट आई एम ब्रीफली डिस्क्राइब द चेयरपर्सन मे बी द हॉस्पिटल एमएस हो सकता है, मेडिकल डायरेक्टर, चीफ मेडिकल ऑफिसर. इस कमिटी में दो सीनियर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे, दो मेंबर एक्सपर्ट होंगे. वो कोई भी हो सकते हैं, एनजीओ के मेंबर हो सकते हैं, कोई लॉयर हो सकते हैं, कोई जज हो सकते हैं, कोई रिनोन डॉक्टर्स हो सकते हैं एंड सेक्रेटरी हेल्थ, और उनका कोई नॉमिनी हो सकता है. तो दिस पर्सन कॉन्स्टिट्यूट द ऑथराइजेशन कमिटी. ये हर डिवीजन लेवल पे एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के लिए काम करते हैं. ऑथराइजेशन कमिटी का क्या काम है? ऑथराइजेशन कमिटी उस रीजन में जितने भी ट्रांसप्लांटेशन होने वाले हैं उनकी परमिशन इशू करेगा. मेनली लाइव परमिशन अगर होने वाली है, जैसे आपको पता है कि डोनेशन या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन दो कंडीशन में किया जा सकता है. वन लाइव डोनेशन, सेकंड इज द कैडेवरिक डोनेशन. लाइव डोनेशन में जब रिसिपिएंट को ऑर्गन की जरूरत होती है तो वो अपने साथ किसी एक डोनर को ढूंढता है, उसके परिवार में से उस डोनर से एक एप्लीकेशन ऑथराइजेशन कमेटी के पास आती है. ऑथराइजेशन कमेटी उस एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी, उनके डॉक्यूमेंट देखेगी, सारी चीजों को वेरीफाई करेगा और उसके बाद उसको परमिशन इशू करेगा. विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑथराइजेशन कमेटी कोई भी हॉस्पिटल ट्रांसप्लांटेशन नहीं कर सकता. तो ऑथराइजेशन कमेटी बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, ऑर्गन डोनेशन में. जब कैडेवरिक डोनेशन की बात आती है, कैडेवरिक डोनेशन के लिए रिसिपिएंट को अपने आप को रजिस्टर करना होता है सोटो में, नोटो में. उसको ये बताना पड़ता है कि हाँ मेरे पास कोई डोनर अवेलेबल नहीं है, इसलिए जब भी कैडेवरिक डोनर अवेलेबल होगा तो मुझे ऑर्गन दिया जाए. उसके लिए एक वेटिंग लिस्ट क्रिएट की जाती है. तो उस वेटिंग लिस्ट के लिए उस पेशेंट का, उस रिसिपिएंट का एक स्कोर डिसाइड किया जाता है. दैट स्कोर को डिसाइड करने का काम ऑथराइजेशन कमेटी करती है. वो कैसे करती है स्कोर डिसाइड, वो हम थोड़ा आगे की स्लाइड में देखेंगे तो समझ आ जाएगा. उस स्कोर के आधार पे ऑथराइजेशन कमेटी उस पेशेंट को, उस रिसिपिएंट को, प्रोस्पेक्टिव रिसिपिएंट को वेटिंग लिस्ट में रजिस्टर करवाने में हेल्प करती है. वेटिंग लिस्ट कहाँ मिलेगी? कौन मॉनिटर करेगा? सोटो करेगा. तो सोटो के पास पूरी वेटिंग लिस्ट अवेलेबल होती है. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑथराइजेशन कमेटी. ऑथराइजेशन कमेटी को अगर कभी भी लगता है कि ये केस ठीक नहीं है या ये डोनर और रिसिपिएंट के कुछ प्रॉब्लम है, तो वो इसको परमिशन इशू नहीं करेगी. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑथराइजेशन कमेटी. थर्ड पर्सन जो होता है, दैट इज ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर होता है. जो जब भी ट्रांसप्लांटेशन होता है, चाहे लाइव डोनेशन का हो चाहे कैडेवरिक डोनेशन का हो, उसकी टोटल डॉक्यूमेंटेशन से लेके मॉनिटरिंग करना, उसमें फैसिलिटेट करना, उसमें हेल्प करने का काम ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर का होता है. ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर भारत सरकार ने मैंडेटरी कर रखे हैं एवरी ट्रांसप्लांट सेंटर में, सभी हॉस्पिटल में, जो कि फैमिली की काउंसलिंग करने से लेकर के ट्रांसप्लांटेशन की कंप्लीट प्रोसीजर को मॉनिटर करेगा, डॉक्यूमेंटेशन करेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करेगा.
It is about transplant coordinator, authorization committee, and appropriate authority. How recipient get registration in the waiting list? That is again important point. कि अगर किसी को, if anybody want कि मुझे organ की जरूरत है ना, I want to be registered in the waiting list of the Sotto and waiting list of the Noto. So how it's done? So patient can be registered to any hospital, right? But only one center of the state. That is very important कि patient can register only from the one center. वो ऐसा नहीं कर सकता कि मैं 4 हॉस्पिटल में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा लूं कि जहां पे ऑर्गन मिलेगा वहां पे मैं ले लूंगा. He is permitted to be registered only at the one center of the state hospital or that center, transplant center. Check the eligibility, check the patient recipient that whether he is medically fit for organ transplant or not, and generate a Noto ID. Noto ID is mandatory for registration to the waiting list. Then application is filled, file prepared and sent to authorization committee. Authorization committee वेरीफाई करेगी, उसका स्कोर डिसाइड करेगी एंड सोटो को इन्फॉर्म करेगी, सोटो का रजिस्ट्रेशन करेगा. वंस पेशेंट गेट रजिस्टर्ड टू द वेटिंग लिस्ट, he will be eligible for getting registered for getting organ after a buffer period of 48 hours. अगर आज किसी ने अपने आप को वेटिंग लिस्ट में रजिस्टर किया है तो उसको ऑर्गन मिलने की एलिजिबिलिटी 48 आवर्स के बाद ही होगी, राइट? और इसमें ऐसा भी है कि इफ पेशेंट वांट टू ट्रांसफर देयर हॉस्पिटल, ही इज फ्री, वो अपना हॉस्पिटल ट्रांसफर कर सकता है. और तो जो वेटिंग लिस्ट है वो एवरी 3 मंथ में अपडेट करवानी होती है अपने रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल से. तो ये एक प्रोसीजर बना हुआ है बाय विच एंड एनी पर्सन, एनी प्रोस्पेक्टिव रिसिपिएंट कैन रजिस्टर देमसेल्व्स ओवर द साइट ऑफ द सोटो. तो इस प्रकार से वो वेटिंग लिस्ट में रजिस्टर हो जाएगा. देन आई जस्ट गो थ्रू क्विकली प्रोसीजर, हाउ ये प्रोसीजर कैसे चलता है. जब भी कैडेवरिक डोनेशन होता है, लाइव डोनेशन में तो बहुत सिंपल है कि जो जिसको ऑर्गन की जरूरत है वो एक अपने लिए डोनर को आइडेंटिफाई करेगा और आइडेंटिफाई करके डोनर एंड रिसिपिएंट जॉइंटली एक एप्लीकेशन प्रिपेयर करके अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास भेजेंगे. अप्रोप्रिएट अथॉरिटी स्क्रूटिनाइज ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जो उसका रिलेशनशिप, इमोशनल फैक्टर जो भी स्टेब्लिश चेक करेगा एंड परमिशन इशू कर देगा. प्रॉब्लम होती है कैडेवरिक डोनेशन में. कैडेवरिक डोनेशन जब भी होगा तो वो अचानक से होता है, उसके लिए पहले से कुछ भी प्लानिंग नहीं होती है. नोबडी नोस कि कब ऑर्गन अवेलेबल होने वाला है, कब कैडेवरिक डोनेशन अवेलेबल होने वाला है. जब भी ब्रेन स्टेम डेथ होगा कैडेवरिक डोनेशन के लिए ऑर्गन अवेलेबल होगा. तो हाउ दिस प्रोसेस गोज ऑन, so these are the various steps in which organ donation process takes place. तो फर्स्ट प्रोसेस इज आइडेंटिफाइंग अ पोटेंशियल डोनर. जब भी कहीं पे ब्रेन स्टेम डेथ होगी किसी हॉस्पिटल में तो उसको आइडेंटिफाई करना होगा. आईसीयू स्टाफ जो होता है, नर्सिंग स्टाफ जो होता है, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर जो होता है, इट इज देयर ड्यूटी कि वेन एवर देयर इज ए पोटेंशियल डोनर दे शुड इन्फॉर्म टू द, जो भी उनका अथॉरिटी है उसको इन्फॉर्म करना है. तो सबसे पहला काम हो गया कि पोटेंशियल डोनर को आइडेंटिफाई करना. पोटेंशियल डोनर आइडेंटिफाई हो गया तो फर्स्ट वी हैव टू कंफर्म ब्रेन स्टेम डेथ है या नहीं है. सॉरी. तो ब्रेन स्टेम डेथ को कंफर्म करने का काम उस हॉस्पिटल की जो ब्रेन स्टेम डेथ की कमिटी होगी वो करेगी. तो ये प्रक्रिया साइमल्टेनियसली चलती जाती है कि अगर पोटेंशियल डोनर हॉस्पिटल में अवेलेबल है तो ब्रेन स्टेम कमिटी वेरीफाई करेगी. उसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिसको एपनिया टेस्ट बोला जाता है. एपनिया टेस्ट में डिफरेंट कई सारे टेस्ट होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेस्ट कमिटी डिसाइडेड कि यस दिस पर्सन इज ब्रेन डेड. इट मीन्स दैट इफ पर्सन इज ब्रेन डेड so organ can be taken, their family can give the consent for donation of the organ, and simultaneously at that time the duty of the transplant coordinator to counsel the family member, because without the consent of the family member we cannot take the organ of the donor, right? Even if the person has give the consent or give the pledge form during his life, we cannot take the organ without the permission of the family member. Consent is very important. तो नोटो की वेबसाइट पे डिफरेंट प्रोफार्मास बने हुए हैं एंड इन दैट प्रोफार्मा दे हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ द फैमिली मेंबर. That is called the form number 8. So different number of the forms are available over the site of the Noto, and in that form they have to fill that required detail and send it to Soto or appropriate authority. तो देन कंसेंट इज मिल जब कंसेंट मिल जाएगी उनको, देन वो प्रोसीड करेंगे आगे ऑर्गन डोनेशन की कार्रवाई करने के लिए.
राइट। तो एपनिया टेस्ट करने के बाद जब ब्रेन स्टेम कमिटी जो होगी, डेथ कमिटी, वो अपना निर्णय फॉर्म नंबर 10 में फिल करके भेजेंगे। तो उसके लिए भी देयर इज कमिटी ऑन द हॉस्पिटल, डिफरेंट मेंबर्स आर प्रेजेंट इन द कमिटी। इन दैट कमिटी देयर इज ए इंटेंसिव, देयर इज ए मेडिकल ऑफिसर, देयर इज ए न्यूरोफिजिशियन और न्यूरोसर्जन, एंड दे गिव their comment, their decision in the form number 10, and एपनिया टेस्ट 2 बार किया जाता है एट द इंटरवल ऑफ द 6 आवर। 6 घंटे के अंतराल के बाद 2 बार एपनिया टेस्ट करने के बाद कमिटी डिसीजन दे देती है दिस पर्सन इज ब्रेन डेड, राइट। एंड देन वी कैन प्रोसीड फॉर द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन डोनेशन, इफ फैमिली गिव कंसेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कंसेंट ऑफ द फैमिली। These are the various forms available over the site of the Noto that can be freely downloadable. When the family give consent, the hospital stop check donors medical suitability. ये देखा जाता है कि ये ऑर्गन सुटेबल है या नहीं है, ये पर्सन सुटेबल है या नहीं ऑर्गन देने के लिए। तो सुटेबिलिटी देखेंगे, ऑर्गन ठीक है तो डोनर का मैनेजमेंट करेंगे, क्योंकि जब तक ऑर्गन एलोकेशन हो रहा है तब तक डोनर को सर्वाइव करवाना है, लाइव रखना है, ऑर्गन की वाइबिलिटी को मेंटेन रखना है, तो डोनर मेंटेन किया जाएगा। देन देन सब सारी चीजें हो जाएगी, अलोकेशन हो जाएगा, देन ऑर्गन को रिकवर किया जाएगा। रिकवर किया जाएगा मतलब निकाल करके उनको जहाँ भेजना है वहाँ भेजा जाएगा। तो ऑर्गन विल रिकवर्ड, उनको प्रिजर्व किया जाएगा ताकि वो खराब ना हो बाहर निकलने के बाद। तो उनको प्रिजर्व किया जाएगा जब तक कि वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो जाते हैं। उसके लिए कुछ टिश्यू फ्लूइड्स आते हैं कुछ उसमें, जिसको उनको वाइबल रखा जाता है, टेम्परेचर लो किया जाता है और उनको वाइबल रखा जाता है। देन उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, एक शहर से दूसरे शहर जहाँ भी भेजना है, और उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है। तो ग्रीन कॉरिडोर इज बेसिकली एक ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है, जिस ताकि उसको कहीं भी रुकना ना पड़े। वो चाहे बाय रोड जाए चाहे बाय फ्लाइट जाए। फ्लाइट में भी ये विशेष प्रोविजन है कि ऑर्गन जब फ्लाइट में जाता है तो उसको जो एक्सरे स्कैन होता है वो नहीं किया जाता है, राइट। सो दैट इज द ग्रीन कॉरिडोर। एयर में भी बनाया जाता है ग्रीन कॉरिडोर, बाय रोड भी ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है। ग्रीन कॉरिडोर बना करके ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वाई इट इज इम्पोर्टेंट? द टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। So once we take out the organ from the body, the viability of the organ or decreases. तो अगर हार्ट को हमने 4 से 6 घंटे में ट्रांसप्लांट नहीं किया तो हार्ट विल बी ऑफ द नो यूज। सेम फॉर द लंग्स, लंग्स का भी 4 से 8 घंटे का समय है। इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियास, देयर आर डिफरेंट टाइम पीरियड फॉर द एवरी ऑर्गन्स इन विच इट हैज टू बी ट्रांसप्लांटेड टू द सुटेबल रिसिपिएंट, अदरवाइज इट विल बी नो यूज। तो अलग अलग ऑर्गन, तो इसलिए टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल जो मन में आता है और जो बहुत बड़ा मिथ है हमारे कंट्री में या सभी लोगों में, ऑर्गन का एलोकेशन कैसे होता है? डोनर ने बोल दिया मैं ऑर्गन दे रहा हूँ, फैमिली मेंबर, जब काउंसलर हमारे काउंसलिंग करते हैं तो फैमिली मेंबर पूछते हैं कि ऑर्गन तो मतलब बेच तो नहीं देगा कहीं, तो ऐसा तो नहीं कि अपने किसी पहचान वाले को लगा देगा। तो ये जो मिथ है इसके कारण से भी कई बार लोग ऑर्गन डोनेशन करने से कतराते हैं। तो हाउ ऑर्गन एलोकेशन डन, ये बहुत जानना जरूरी है हमारे लिए। ये सारा फंक्शन जितना अभी तक हो रहा था, दिस इट इज ऑल मॉनिटर्ड कोऑर्डिनेटेड बाय द सोटो। सोटो इसको कंप्लीटली वॉच करता है, कंप्लीटली कंटिन्यूअसली सभी से कोऑर्डिनेशन करता है, मॉनिटरिंग करता है। और एक बार जब ब्रेन स्टेम डेथ आइडेंटिफाई होता है, कंप्लीट प्रोसीजर रन अबाउट 48 आवर्स, और 48 आवर्स तक सोटो की टीम लगातार काम करती है। दिन रात कोई टाइम नहीं देखा जाता है, पूरे समय वो लोग काम करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मध्य प्रदेश ने भी अपनी गाइडलाइन बनी है ऑर्गन एलोकेशन करने की, दैट इज derived from the guideline of the national guideline, and on the basis of that guideline we do the allocation of the organ. तो ट्रुथ क्या है, सच्चाई क्या है? ऑर्गन एलोकेटेड एज पर प्रायोरिटी बेस्ड वेटिंग लिस्ट अकॉर्डिंग टू ब्लड ग्रुप। so there is a waiting list present at every सोटो। सोटो के पास अपनी वेटिंग लिस्ट है पूरे प्रदेश की, and on the basis of that waiting list it allocate organ. How decide the priority? So priority is based on severity of the disease, and that allocation is monitored by Soto, Roto, and Noto, right? So at the national level, organ monitoring is done. The important thing is there is no charge applied to donor family for organ retrieval. Once donor जब अपनी कंसेंट दे देते हैं
उसके बाद उनसे हॉस्पिटल का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है ऑर्गन को निकालने के लिए, ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और उन डोनर को मेंटेन करने के लिए। बट ये इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट नो फाइनेंशियल बेनिफिट इज गिवन टू डोनर फैमिली। ऐसा नहीं है कि डोनर की फैमिली का फीस माफ कर दिया जाएगा, उनको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाएगा। एंड important thing is organ is provided to recipient free of cost. There is no charge applied to recipient for the organ, but जो ओटी का चार्ज है, सर्जरी का चार्ज होता है, it has to be paid by the recipient. तो ये सारी चीजें हैं जिसमें हम ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एलोकेट करते हैं। हाउ ऑर्गन एलोकेशन इज डन? तो जैसा मैंने बताया, स्कोर बेस्ड एलोकेशन सिस्टम इज देयर। स्कोर बेस्ड एलोकेशन के हिसाब से वेटिंग बनाई जाती है, अकॉर्डिंग टू वेटिंग लिस्ट ऑर्गन इज अलोकेटेड। ऑर्गन किसको अलोकेट करेंगे, वेटिंग लिस्ट कैसे बनाते हैं? इट इज ब्लड ग्रुप कॉम्पिटिटिव के अकॉर्डिंग वेटिंग लिस्ट बनाई जाती है। ब्लड ग्रुप आइडेंटिकल, ब्लड ग्रुप कॉम्पिटिबल। आइडेंटिकल मीन्स जैसे ए ब्लड ग्रुप का ऑर्गन अवेलेबल है, ए ग्रुप का डोनर अवेलेबल है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी विल गिवन टू द ए ग्रुप रिसिपिएंट। ओ का है तो ओ को। अगर इफ देट इज नॉट अवेलेबल, ब्लड ग्रुप कॉम्पिटिबल देखा जाएगा, वो भी अवेलेबल नहीं है, एबीओ इनकॉम्पिटेबल ब्लड ग्रुप में ऑर्गन दिया जाएगा। कोशिश ये होती है कि ऑर्गन का वेस्टेज ना हो, वो कहीं ना कहीं इम्प्लांट हो जाए। एंड देयर इज ऑल्सो प्रायोरिटी गिवन टू द urgent patient of super urgent patient. If these categories decided by the appropriate authority, hospital send a request to the appropriate authority and authorization committee decide क्या सही में सुपर अर्जेंट कैटेगरी को आता है। देयर इज सर्टेन क्राइटेरिया डिसाइडेड फॉर सुपर अर्जेंट कैटेगरी। इफ patient or prospective recipient fit into that category, it will considered a super urgent patient, super urgent recipient, and whenever organ is available, priority is given to super urgent recipient. एक एग्जाम्पल है, जैसे किडनी का स्कोरिंग सिस्टम बनाने के लिए ऑथराइजेशन कमेटी जब बैठती है, तो उसमें जो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं वो इस क्राइटेरिया को देखते हैं कि कितनी बार डायलिसिस हो रहा है, कब से डायलिसिस हो रहा है, एज क्या है उनका, उनका वास्कुलर एक्सेस का क्या स्टेटस है, और अकॉर्डिंग टू दैट दे असाइन नंबर टू द I think you are on mute. Your voice is not coming, Dr. Purohit. Dr. Purohit, we can't hear you. We can't even see actually. So I think कोई Yeah. problem है. Dr. Purohit, can you hear us, Dr. Purohit? Internet problem. Dr. Purohit, can you hear us? Dr. Purohit? Okay. When the Dr. Purohit will join, till the time only. Now the problem is that his screen is on. We can't do anything. Can we? Yes, we can, I think. Yes. Dr. Purohit is, I think the internet problem is there. So he has made a very important positions today, role of Sotto, Noto and everything. And the people who talks always that the organs can be traded or can be purchased. One can see how much work organizations, government organizations are doing, like Sotto. He said that 48 hours they are working non-stop. This is a very important thing to be noted, that once a person is declared a brain death and the family give consent, then immediately the role of Sotto starts. Because once the rather he says when the patient is declared that he is going to be the brain death, that role starts. And how they have to do it, it is not an easy thing to be done, because they have to match, they have to see which one is the most compatible person, like that. I am trying to reach to Dr. Purohit if he can, because it's a very, very interesting topic which we are discussing. And I'm happy that our Rotaract Club Charter President is there. I can see one or two members of Rotaract Club here of our Rotaract Club of Raja Balwant Singh Engineering Technical Campus. It is very good, because if the youth will understand the nitty-gritty and the reality, how the things are done. Yes, Dr. Purohit is now joining again. So they can very well explain to the public at large that it is not that everything is can be manipulated. I think now Dr. Purohit is there. Yes, hello. Yes, Dr. Purohit, we can hear you. I think it is some technical issue is what disconnected, sir.
Yeah, no issues, doctor. It happens many times. So can you just start your this thing again? Share the screen. Yeah, sir. Actually, this time laptop is not connected, so I am connected from my mobile, sir. Right? So not able to show you my PPT. So No, I will you just can, yeah, you can explain. Yes, no issue. yeah. So there is a criteria for the allocation, and on the basis of the criteria, the score is decided. Dr. Purohit, can you just make your camera like this in this way instead of mobile? Huh? Yes, if it is low, yes. Now you're on the full screen because it's a live telecast. Okay, right. So yeah. So then on the basis of there, the waiting list is created, and in that waiting list, the first priority is goes to the recipient of the hospital. जिस हॉस्पिटल में बीएसडी हो रही है, जिस हॉस्पिटल में ऑर्गन अवेलेबल है, उस हॉस्पिटल की वेटिंग लिस्ट को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है. आफ्टर दैट द वेटिंग लिस्ट ऑफ द सिटी. ऑन द सिटी वेटिंग लिस्ट में जिसका स्कोर सबसे ज्यादा है, उस पेशेंट को, उस रिसिपिएंट को प्रायोरिटी दी जाएगी एट दैट टाइम. सो हॉस्पिटल को इन्फॉर्म किया जाता है कि ये पेशेंट आपका वेटिंग लिस्ट में सबसे पहले है, इस पेशेंट से आप बात करिए. तो हॉस्पिटल उस समय उस पेशेंट से बात करेगा एंड पेशेंट को बुलाएगा, और वो पेशेंट एग्री होता है तो उसको ऑर्गन का एलोकेशन किया जाएगा. सो देयर इज ए complete procedure. First organ priority is given to the waiting list of the city. If there is no recipient available in the city, the organ will offer to the state, then to the region, then to the national, and then to the coroner. So it is the complete sequence in which the organ allocation is done by the Sotto, and this complete procedure is also monitored by the Roto and Noto. So ये एक complete procedure है जिसमें hospital staff, सोटो का स्टाफ, रोटो नोटो मॉनिटरिंग करते हैं, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी उसको मॉनिटर करता है, और ऑर्गन का एलोकेशन डिसाइड किया जाता है. राइट? ऑर्गन जब एलोकेट किया जाता है तो एट दैट टाइम द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, जो रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल होगा, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन सेंड करेगा कि उसने ये ऑर्गन किस रिसिपिएंट के लिए ऑफर किया है, कौन सा रिसिपिएंट उनका आ रहा है, एंड इट इज अ कंप्लीट फॉर्मेट इन विच इट सेंड द इंफॉर्मेशन टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंड द सोटो. And on the basis of that, Sotto allocate the organ. Sotto issue a letter to the divisional commissioner also, so that the procedure for the green corridor can be maintained. Divisional commissioner send an order to police staff, to traffic police, to airport authority, so that whenever the organ has to be sent, it should be reached timely. Because I said already that it is very important to manage the time, otherwise we will lose our viability of our organ and it will be no use. तो सारा पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस, एयरपोर्ट अथॉरिटी, सभी लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और जहां भी ऑर्गन को भेजना होता है वो टाइमली मैनर में ग्रीन कॉरिडोर बना करके भेज दिया जाता है. तो इट इज द कंप्लीट प्रोसीजर फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रेन स्टेम डेथ टू द ट्रांसपोर्टेशन, एलोकेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द ऑर्गन. एंड इसके बाद सोटो उसको फॉलो करता है. ऑर्गन जिसको लगना था उसको लगा या नहीं, उस ऑर्गन का क्या हुआ, पेशेंट ठीक है या नहीं है, उसको फॉलो अप लिया जाता है और उसका स्टेटस अपडेट किया जाता है. तो इट इज द कंप्लीट प्रोसीजर. सो इसके बाद मैं समझ सकता हूँ कि सोटो के क्या फंक्शन होते हैं, आपको मालूम चले होंगे. राइट? तो बेसिकली जो अब मैं नाउ कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ द सोटो. एक ब्रीफ मैंने आपको सारी प्रक्रिया बताई, एंड देन सोटो के क्या फंक्शन होते हैं. सो सबसे पहला सोटो का फंक्शन है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑल द स्कीम्स ऑफ द नोटो. तो नोटो जितनी भी स्कीम्स वहां से बनाता है, जितनी भी पॉलिसी बनाता है, उनको स्टेट में अप्लाई करवाने का काम सोटो का है. दूसरा महत्वपूर्ण कारण, मेंटेन अ वेटिंग लिस्ट. पूरे स्टेट की वेटिंग लिस्ट सोटो के पास होती है, ऑर्गन वाइज, ब्लड ग्रुप वाइज, सिटी वाइज, हॉस्पिटल वाइज. तो दैट वेटिंग लिस्ट सोटो मेंटेन करता है, एंड एवरी 3 मंथ उस वेटिंग लिस्ट को अपडेट किया जाता है. व्हेनेवर देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गन एलोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसप्लांटेशन, ये सारी जिम्मेदारी सोटो के पास होती है. अपार्ट फ्रॉम द दैट आईईसी एक्टिविटी, प्रदेश में, अपने रीजन में जितना भी ऑर्गन डोनेशन को, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को प्रमोट करना है, उसके लिए जो भी एक्टिविटी होगी, वेदर इट वुड बी कोई वर्कशॉप करना है, ट्रेनिंग करवाना है,
कोई प्ले करवाना है, तो वो सारी एक्टिविटी, ब्रोशर प्रिंट करवाना है, होर्डिंग सिटी में लगवाना है, तो वो सारे काम करने का काम सोटो का होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, नेटवर्किंग, सारे हॉस्पिटल से नेटवर्किंग लेना, सारा डेटा कलेक्ट करना, डेली डेटा कलेक्ट किया जाता है। आपके हॉस्पिटल में आज कितना ब्रेन स्टेम डेथ हुआ है, आज कितना सर्टिफाई हुआ है, वो सारा डेटा कलेक्टेड बाय द सोटो एंड इट सेंड टू द नोटो। तो ये सारे फंक्शन सोटो के करने होते हैं। तो इस प्रकार से सोटो एक एजेंसी, एक नोडल की तरह से काम करता है, जिसमें पूरा गवर्नमेंट प्रशासन और सारा हॉस्पिटल जो भी ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, जो रिट्रीवल कर रहे हैं, इवन जो ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे हैं, जिनमें से आईसीयूज है, तो वहां से भी डेटा लिया जाता है कि आपके यहाँ पे कितना बीएसडी हो रहा है। इफ देयर इज सस्पेक्टेड बीएसडी, तो दैट हैज टू बी शिफ्टेड टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल वेयर ट्रांसप्लांट फैसिलिटी या रिट्रीवल फैसिलिटी इज अवेलेबल। सो वो मॉनिटरिंग करने का काम, उसका कोऑर्डिनेशन करने का काम भी सोटो का होता है। तो दीज आर ऑल फंक्शंस ऑफ द सोटो। तो यही सोटो के फंक्शन है और यही सारा सोटो मैनेज करता है। अब आपकी कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क Yes, मी। yes, yes. Okay, thank you very much, Dr. Purohit. Aapne, the way you have explained today, I think we all are very happy to understand that what is the function, because people used to ask, do you think the government is doing so much work? But today Yes, you sir. have opened our eyes that the government, as you have said, 48 hours, Sotto is working whenever there is a patient, potential brain death person is available, the patient is available. Now, I have some questions before Yes, I sir. will open to everybody, because this is a very technical thing, and I want that all our members who want to ask the question, they should restrict only for the technicalities about the government and the Sotto and Noto. Now, my first question to you is, your designation is a nodal officer. Yes, Now, sir. what is the role of a nodal officer? Sir, being as a nodal, I have to monitor all the activity of the Soto, whether it is the allocation of the organ or updation of the scoring or maintaining a waiting list. So all I have done under the guidance of the appropriate authority, as Dean is the appropriate authority in the Indore for the Soto and also for the college also. So I monitor all the things, all the work related to Soto, managed by me and my team, sir. There is one more technical officer and then one more transplant coordinator. So I'll do the work along with them, sir. Okay, thank you, Dr. Purohit. Now, after seeing your PPT, now I have some questions on that. You have Yes, mentioned that one person can, the recipient can list in the waiting list in one city of a state. Yes, sir. Can he list in different states? No, he can't. What is the how you can cross check? Suppose I list myself in Maharashtra and also I list in Uttar Pradesh. Is there any cross checking done by the Noto? Because Yes, sir. Yes, sir. Because when patient has to be registered to any hospital or any Soto website, he require Noto ID, and Noto ID is generated from the national agency, and that is the unique for the individual, just like the Aadhaar number. Okay. Thirdly, you have mentioned that no cash incentive can be given to the donor family. Yes, sir. But Odisha government has started a Suraj Award, in which on the organ donation day, now it is earlier it was 13th August, now it is 3rd August, they are giving Suraj Award along with 5 lakhs rupees cash. Now, I have asked the same thing in the RTI. Unfortunately, Ministry of Health and Family Welfare, Noto, is silent on that, because if it is not, then how Odisha government can give 5 lakhs rupees, because it's still like inducement, and as per the Act 1994, Definitely. no one. Yes, what is your state is doing on that? No, sir, we are not giving any incentives. No, Noto has given the guideline that we have to give 10,000 rupees for the cremation of the donor family, just at the time of the donation. Apart from and only Shal and Shrifal for also same, to facilitate, to motivate that other people should motivate to do the organ donation. Yes, but no cash incentive, because few of the states are even giving the state honor, where they are giving the 21 gun salute to the deceased person. This can be given, sir. Yes, that is allowed. Okay. That is allowed, but financial benefit is not allowed, sir. Okay. Now you have mentioned that in your PPT that the donor has not to pay anything once he is declared as a brain dead donor. Now, once he is declared a brain dead donor, after the consent of the
patient's relatives. Yes, sir. Before that, suppose he is admitted for 10 days in the Yes. ICU, and Yes, sir. on the 11th day, the family give the consent. What Yes, what will be the fate of that first 10 days charges Yes, of yes. the hospital? He has to pay charges for the 10 day, but after the 10 day, if his donation happen on the 15th day, so he do not have to pay for that 5 days, but he has to pay for the 10 days, sir. Okay. Now you have also mentioned that patient money not available. Sorry. One thing which is not clearly mentioned, and there is a lots of confusion. In United States, there is a law that for 2 years, the donor family cannot be given the identity of the recipient. Yes. In Yes. India, is such type of law is prevailing or not? Yes. It is completely confidential procedure, sir. That donor family do not know the organ given to the whose family. So it is not revealed that. But in India, the time the donation takes place, suppose we are talking of Indore. Now from Yes. Indore, some patient is admitted in a Bhandari hospital, and from Yes. there one kidney has gone to Chaitram hospital, and Yes. it Yes. is coming in the media very Yes. prominently. So it Yes, is sir. very easy for the donor family to come to know who is the recipient. Definitely. Is there any check on that or no? No, sir. We many times we have asked the news reporter that they should not mention about the where organ is going. But actually, Indore is a small city, and they know that where organ is going. But it is against the law, sir. It do not permit to reveal the identity of the recipient, sir. Dr. Purohit, I agree with you, but I have seen many NGOs also are writing officially that this particular organ has gone to Bombay KEM hospital or so and so hospital or global hospital, and this one has gone to Ahmedabad, this one has gone to Bhopal. When they are mentioning on the same day, just to highlight their achievements, is it right? And if wrong, then what action Sotto is taking in that? Yes, sir. It is not right, sir. It is wrong to reveal the transportation or allocation of the organs. But there is no provision in the law to punish or to take any action against this act, sir. We are discussing on that, sir. Dr. Purohit, although in one of the slide of yours, it is mentioned that the appropriate authorities are having the power of a civil court. Yes, sir. They can scrutinize and send the report to the Noto, and on the guidance of the Noto, they will take action against that agency or hospital. Right. One more. They can cancel their registration also, sir. It is having the power by the Noto, sir. One more practical problem, which we are facing many times. That, like you said, that one particular recipient who is eligible for this particular donor, and the call is being made to them to come to the hospital. Now that hospital being as you know, that maximum transplants have been taking place in the private hospital, and then the private hospital say, please deposit 10 lakhs of rupees, and the patient, the recipient's family is not in position to pay 10 lakhs of rupees. Then they jump to the hospital jump to the next waitlist patient. Is it happening, and what action the Sotto is taking on that? Sir, in the return, we take the letter from the recipient who refuses to take the organ because of the financial issues. And after that, we allocate the organ to the person who is next in the waiting list. So it means that Sotto or Noto is not giving the financial assistance to the patient who is poor patient. It means the poor patient will not have any meaning of the wait list because he cannot bring 10 lakhs. Is it correct, Dr. Purohit? Yes, sir. In the government, Noto or Sotto is not having any budget for the allotting to the poor patient. But in the Ayushman scheme, there is certain budgets available for the transplantation, sir. So if person is involved in that scheme, he can take the benefit of that scheme. But he can register himself or themselves for the government hospital where transplantation is taken. So in the government setup, it is free of cost, sir. But the government hospitals have, like Indore, if we are talking, your MGM is doing kidney transplant.
Yes, super specialty is having kidney transplant. Which other transplant your NGM is doing? No, presently no. Presently no. So suppose there is a heart receipt. Yes, yes, sir. Either at Chotram or wherever this thing. There Definitely. the money has to be paid. Yeah, that I have mentioned in my issue and challenges slide, sir. Okay. That is high cost. Like I will tell you, the Ayushman Bharat and PMJY scheme, Yes. there is a scheme where the 15 lakhs of rupees is now allocated for the organ transplants for the BPL patients, the below poverty line patients. Yes, sir. Is Sotto of Madhya Pradesh is following that scheme or not? Sir, we are not involved in the scheme. Person and hospital direct having a tie-up with the government to give the benefit of the scheme to the individual, sir. It is not role of the Sotto. No, but Dr. Purohit, the thing is, a patient who is a poor patient, he is not aware about this scheme. Yes. This scheme is a government scheme, which Yes. I think I have shared when I discussed with you all and along with the Dr. Dikshit also, that this scheme is there for 15 lakhs of rupees. If you want, I can share you the detail also of that. Yes, Now, sir. now when that scheme is there, and if the patient, if the hospital, because what hospital says, private hospital, which I discussed with them, they says we are not interested in any scheme because the Ayushman payment always comes quite late, 2, 3 months or 4 months. So we believe that whosoever is making the payment will give the organ to them. So basically, in one way, we are saying that the BPL patient, the below poverty line patient in India, is having no meaning even of this wait list, because he cannot bring 8 or 10 lakhs or 15 lakhs of rupees at one stroke. Now, because as you mentioned, that this is something which nobody knows when he will get the organ. It's a thing which is nobody's control. So anyway, so yes, sir. Okay, so thank you very much. These are my questions which I found from your. Now I'm opening to all of our members. Please, my request to all of members, please be this thing only for the things which are related to Noto, Sotto, and Roto. For that, Dr. Purohit will be, and after that, I would like to have words from Dr. Sanjay Dikshit, also such a senior doctor and such a person who can give his blessings and his advices, which are definitely of our all of us use. So yes, I'm opening. Yes, I can see Dr. Girdhari Agrawal's hand goes up. Yes, Dr. Girdhari Agrawal. Yeah, I've been trying to get into the conversation. But anyway, thank you very much, Dr. Purohit. It was a very nice presentation given by you. One thing I would like to know, two of my major questions were asked by Rotary Larwell, so those go away. Yes. But I want to know, you see, at many times, if a patient is called for transplantation at the dead of the night, let's say around 2 o'clock, where there is a time limit is there for the transplantation. Yes, sir. And at that time, today, liver transplantation, you need much more money than 10 or 15 lakhs. It may be 30 lakhs or 40 lakhs, something like that. So how in the dead of the night, even a person who can afford the money, how can he arrange that kind of money? Then what happens? That is their issue, sir. Sotto have no role in that arrangement of the money. It is their personal part. That's how they arrange and how they manage. Because many of the time the person come with a chartered plan to receive the organs, sir. Yes. All the kind of things can happen. But anyway, I think this is a question for our club also. Yes. Any other question from anyone? Yeah. Very much. Yes, sir. Dr. Purohit, yes. As you have said, the allocation procedure is a little lengthy. I want to know how much time generally takes from brain death to the actual removal of organ. Yes, sir. Basically, there is 2 apnea tests we have done. First apnea, second apnea test is done after the 6 hour of the first apnea test. So there is a time gap of 6 hours in which we decide the organ has to be allocated to which person, which patient. During that time, we can decide. And after the second apnea test, we call the patient, we allocate the organ,
and decide in how many time it will come to the hospital. Many of the time it happen that person is not in the Indore city, is residing in some Delhi or Mumbai or Jabalpur. So we decide the time period, how much time he will come to the hospital. And after that, we decide the retrieval plan. Because until and unless we do not retrieve the organ is viable. Once we retrieve the organ, we have to transplant the organ in the given time period. So we decide the retrieval time on the basis of arrival of the patient, arrival of the prospective recipient, sir. So usually it takes after the second apnea test, within the 6 hour or 6 to 4 hour, we start the process of the retrieval, sir. Then for how much time we can retain the donor after brain death? Donor, sir, it depends upon the donor condition. Okay, what is the condition of the donor? Because usually we maintain the donor. Usually we do the retrieval within the 6 to 12 hours, sir. Usually. But if condition of the donor is suitable, we can maintain it for 24 to 48 hours. But we have to manage the donor and we have to do retrieval as early as possible. As the time is prolonging, the viability of the organ decreases, sir. Yeah. Thank you. Thank you very much, Advocate Dr. Advocate Ramesh Sharma. Any other question, please? Okay, shall I ask? I request Dr. Sanjay Dikshit. Dr. Sanjay Dikshit, please unmute yourself. Yes. Now, Okay. Dr. Sanjay Dikshit, you have heard what Dr. Purohit has said, and your views as a I think most of the points are very well covered by Purohit. I congratulate him for the beautiful presentation. I just want to share 2 or 3 things. The one is in India, the reporting of suspected brainstem death from ICU is very poor. Say at any point of time in a ICU, there are 8 to 10% suspected BSD are there. But because this suspected BSD reporting is less, we are not able to get enough of organs. This is one of the reason of the gap for that. Second is that's why we need to give a frequent training to the ICU of doctors and even to the superintendent of hospital, so that they realize the importance of reporting suspected brainstem death. Number one. Number two, 1 or 2 points which Manish has not covered, I want to share that we have also started doing brainstem, the postmortem of the PSD patients in the hospital itself only, and during night also this is being done, which was not done previously. Second, third point which I want that we must increase the capacity of government hospitals to increase organ transplantation, because it is only 5 to 10% hospitals are, as you have also mentioned, that are doing transplantation. So there is a need for increasing the capacity infrastructure of the government hospitals. And if a person get a transplant of kidney at a government hospital, the Nodal provide them free of cost the maintenance drugs for immunosuppressant. One. Then second is the Nodal also provides 50,000 for cadaver maintenance to the government hospital also. So there are a lot of incentives linked at the government hospital. So if we increase the capacity of the government hospital, the organ transplantation will take a more way forward. Okay, thank you very much, Dr. Dikshit. Although you are in the government helm of the MGM hospital Indore, Dr. Dikshit, as you rightly said, 5 to 10% only the government hospitals having organ transplant centers. Although the government also has a scheme that to provide 1.5 crore rupees to the government hospital if they start the organ transplant center, and 75 lakhs rupees if they start the retrieval center. In spite of that, government hospitals are not coming forward. I will give you an example, because we have just formed a Rotary Club at Agra, and that Agra SN Medical College is one of the oldest medical college in India from 1943. But they don't have even a retrieval center. Forget about the transplant center. In UP, only 5 or 6 districts are having organ transplant or retrieval center, while we have 80 districts in UP. Don't you think that government should take
proactive action in this way, so that at least the government, because where there is no retrieval center, there is no brain death declaration committee. Nothing. Report. Yeah, we can't report. Right. That's what I said, that there is a need to increase the capacity of the government hospitals, and we have to work for that, work for motivation of the government officials. Okay, thank you very much, Dr. Dikshit, for giving your time and coming as a special guest, because we know that you are so busy, and now you have just left means you have been retired, but I'm sure that your heart bleeds, because when we discussed in detail with you, and you are saying that we must do something for organ transplants and organ donation. Thank you very much. Over to you, Dr. Ritika Gupta. Thank you very much. It was a very insightful session where we got very detailed information regarding the role of Sotto for organ donation. And now moving on, I think we're already ahead of time, so I believe we are not having any other discussion. And now moving on to the last leg of the agenda, I would now request Rotarian Ramesh Sharma to please give a vote of thanks. As per data given by Dr. Purohit, the waiting list of organ donation is very lengthy, and the availability of the organs is very short. The difference is huge. The object of our club is to create an awareness for organ donation in public at large, so that this difference may be minimized to some extent. We are very much thankful to Dr. Purohit and Dr. Dikshit also for giving the very accurate information with regard to allocation, transportation, and thereafter the actual operation for organ donation and all these things. And the informations are very much important, and they may help the club and the other persons to have some important acts done immediately. I am very much thankful to all of you for joining, and especially to Dr. Purohit and Dr. Dikshit. Thank you very much. Okay. Thank you.